Unacademy. Let's crack it. Hi students, in my previous lecture on the IPC, we were on general exceptions. We had covered ground till sections 82 and 83. We had dealt in detail with sections 76 and 79. We then went on to 77 and 78. We then went on to accident, section 80, and to necessity in section 81. We then went on to discuss Dole Incapax, section 82, and immunity, which may be not absolute immunity depending upon the level of maturity and understanding of the child to understand the consequences of his act. We now come to section 84. 84 deals with unsoundness of mind. So let's deal with this topic. This is one topic which has come many times in exams, and many times it has come up for consideration in the interview. So we must be very thorough with this section. You know, right from, if we take ancient law, if we take Manusmriti, in Manusmriti in its volume 8, page 312, it is written that a child and an insane person are immune from criminal liability. We go to English law. A mad man has no will. Furoris nulla voluntas est. Furoris nulla voluntas est. Furoris nulla voluntas est. A mad man has no will. Now, a mad man is incapable of knowing the nature and consequences of his act. Section 84 does not use the word mad, insanity, ऐसे words use नहीं करता है. This is the brilliance of Macaulay. That is why I say that nobody can match the brilliance of Lord Macaulay. You know why I have not used these words? Why did Macaulay not use these words? Lunacy, insanity, idiocy. जो हम बाकी लॉज में देखते हैं यही वर्ड यूज होता है. बट इस आदमी की जीनियस देखिए, he did not use. Why? Let's see. See, when I use the word lunacy, lunacy always is basically connected with lunar. Lunar means moon. तो जो लुनाटिक होता है वो मून के वैक्सिंग एंड विनिंग, जैसे फुल मून होता है या नो मून होता है, उसके मुताबिक उसका पागलपन चेंज होता है. सो अ लुनाटिक कीप्स ऑन वैक्सिंग एंड विनिंग एज विद द मून. तो जैसे मून का वैक्सिंग एंड विनिंग होता है उसी तरह का इसका भी होता है. तो हम उसको अनसाउंडनेस में नहीं ला सकते. तो वो बहुत लिमिटेड उसका नेचुरली एप्लीकेशन हो जाएगा. जब हम कह रहे हैं सिर्फ तब होगा पागल जब वो मून या तो कम है या ज्यादा है, तो नेचुरली बहुत कंफ्यूजिंग है. अगर हम वर्ड यूज करें इडियोसी, इडियोसी बेसिकली हुज एन इडियट इन लॉ. एक पैदाइशी पागल इज कॉल्ड एन इडियट. जो पैदाइशी पागल है और जो ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज वो नेचुरली ही इज पागल थ्रू आउट, इसलिए हम उसको इडियट कहते हैं. हम नॉर्मल पार्लेंस में एक दूसरे को कहते रहते हैं यू इडियट. तो वो इडियट का कायदे से लॉ में बहुत सीरियस मीनिंग है, विच मीन्स पैदाइशी पागल.
उसको वो ठीक भी नहीं हो सकता। इसका इडियट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है स्टीफन ने। ही इज गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज अ इडियट। ही सेड इडियट वो होता है जो साथ सो रहा है उसका सिर इसलिए काट देगा कि कल सुबह जब वो उठेगा और अपना सिर ढूंढेगा तो बड़ा मजा आएगा। ये इडियट है। सो वो जो साथ सो रहा था उसका सिर काट दिया, क्यों काटा? कि वो सुबह उठेगा तो अपना सिर ढूंढेगा, बड़ा मजा आएगा। तो अब मैं अगर इडियट वर्ड यूज करता हूं या इडियोसी वर्ड यूज करता हूं, दैट मीन्स ओनली वो जो पैदाइशी पागल है। अगर मैं इंसानिटी वर्ड यूज करता हूं जो इंसानिटी बहुत जगह यूज किया हुआ है, बहुत लॉज इंसानिटी वर्ड यूज करते हैं। सो इफ आई यूज द वर्ड इंसानिटी, इंसानिटी बहुत तरह की होती है, मेनी टाइप्स। let's take some examples. We have dementia naturalis, जिसको हम इडियट कहते हैं। डिमेंशिया नेचुरलिस, दैट मीन्स नेचुरली पागल है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक्सीडेंटलिस, एक्सीडेंट हो गया, उसका थोड़ा दिमाग पे असर हो गया। डिमेंशिया एडवेंचरस, आहिस्ता आहिस्ता उसका पागलपन बढ़ता जाता है। एक और इंसानिटी होती है जो कायदे से एबरेशन इन बिहेवियर है। एबरेशन इन बिहेवियर, let's take examples. Let's take one or two examples. I have suppose bought a Mercedes car. I have not, but let's presume. अच्छा ख्याल है। I bought a Mercedes car और मैं बैक कर रहा हूं। आपने एक पुरानी सी अपनी मारुति 800 रखी है पीछे, मैं नई नई कार लाया हूं, मैं बैक कर रहा हूं, आप देखे बिना पीछे बैक गियर लगाते और बैंग मेरी गाड़ी में मारते हो, मेरी नई गाड़ी में डेंट्स पड़ जाते हैं। मैं उतरता हूं, सीधा श्लोक शुरू हो जाते हैं मुंह से निकलने। वो भी दूसरा भी करता है। इतने में हम अपनी अपनी रॉड निकाल लेते हैं, लड़ाई बहुत बढ़ जाती है, एक दूसरे का सर फाड़ने को तैयार हो गए। जो टायर रॉड्स होती हैं, जैक वगैरह, वो निकाल लेते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। देखा जाए तो ये पागलपन का बिहेवियर है। जैसे हम एक दूसरे के शीशे तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो एक बेसिकली पागलपन का बिहेवियर है। तभी कोई बोलता है पुलिस आ गई, तो हम क्या करते हैं? सामने पुलिस आ गई, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, आपस में हमारी बात है, कोई बात नहीं, चलो चलो यहाँ शोर मत मचाओ, जाओ। दोनों अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। ज्यादा ज्यादा इफ आई वांट आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन टू लॉन्च अ कंप्लेंट। जो हमारा उस टाइम पे इतना पागलपन चल रहा था कि हम शीशे तोड़ रहे हैं, गाड़ी पे मार रहे हो, कह रहे तेरी नई गाड़ी है, जैक अपना मार रहा है गाड़ी पे, क्या और डेंट ले ना हो। एक पुलिसमैन पहुंचते ही सारा फितूर उड़ गया, नॉर्मल हो गए। दैट मीन्स मेरी कहीं ना कहीं जो मेरी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कॉग्निटिव फैकल्टी, इंटैक्ट है। मेरी व्हाट इज कॉग्निटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉग्निटिव फैकल्टी, माय कॉग्निटिव फैकल्टी इज इंटैक्ट। व्हाट इज कॉग्निटिव फैकल्टी? माय रीजनिंग पावर, मेरी रीजनिंग पावर इंटैक्ट है। सो सिंस माय रीजनिंग पावर वाज इंटैक्ट, जैसे ही मुझे कुछ खतरा नजर आया, मैं एकदम नॉर्मल हो गया। लेट्स टेक अनदर केस। देयर इज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहां पे एक यंग मैरिड लड़की का हस्बैंड एक्सीडेंट में मर जाता है। जैसे उसको खबर मिलती है कि तेरे हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में,
तो वो दीवारों पे सिर मारना शुरू करती है, चूड़ियां तोड़ रही है, ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही है, जैसे होता है वो मैड मैन का, मैड पर्सन की तरह बिहेवियर होता है उस टाइम। उसी टाइम when she is banging her head and fists on the wall and trying to kill herself, picking up knife and trying to kill herself, लोग उसको रोक रहे हैं, तभी उसको कोई बोलता है कि तू यहाँ रोना धोना मचा रही है, ऊपर तेरा छोटा बच्चा जो सो रहा था वो कॉट से नीचे गिर गया, वो चारपाई से नीचे गिर गया। उसी टाइम वो रोना धोना बंद, भागती है ऊपर बच्चे को देखने के लिए। इसका मतलब है उसकी रीजनिंग की फैकल्टी सही थी, उसकी रीजनिंग की फैकल्टी इंटैक्ट थी। तो प्लीज रिमेंबर, जो मैडनेस इमोशनलिज्म से आता है, इमोशनलिज्म कैन बी एंगर, कैन बी ग्रीफ, कैन बी एनीथिंग। कोई भी अगर इमोशनलिज्म के थ्रू कोई इस तरह का बिहेवियरल मैडनेस आ रहा है, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की परिभाषा में नहीं आता। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? इंसैनिटी तो है। कोई आदमी अगर अपना सिर मार रहा है दीवारों पे या अपने आप को चाकू मारने की कोशिश कर रहा है, इंसैनिटी तो है, बट दिस इज कॉल्ड मेडिकल इंसैनिटी। सो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, तो इसलिए अब आप सोच सकते हो कि मैकॉले कितना ब्रिलियंट आदमी है, उसने इंसैनिटी वर्ड यूज नहीं किया। इंसैनिटी के फिर बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं। स्किट्सोफ्रेनिया, आदमी को डिल्यूजन्स नजर आते हैं, जैसे वो एक्ट्रेस थी मिस परवीन बाबी, उनको स्किट्सोफ्रेनिया था, और भी हैं ऐसे। स्किट्सोफ्रेनिया वाले को एक डिल्यूजन्स नजर आते हैं, कईयों को कॉकरोचेस नजर आते हैं, कईयों को हर जगह लिजर्ड नजर आते हैं, वगैरह वगैरह। तो इतने तरह के इंसैनिटीज हैं। तो ये इंसैनिटी जो मैं बात कर रहा हूं, जहां इमोशनलिज्म से इंसैनिटी आ रही है, बट आपकी रीजनिंग फैकल्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं वर्ड्स यूज करूं, कॉग्निटिव फैकल्टी अगर आपकी इंटैक्ट है, तो वो मेडिकल इंसैनिटी है। मेडिकल इंसैनिटी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है। तो फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है जहां मेरी रीजनिंग फैकल्टी, मेरी कॉग्निटिव फैकल्टी इंपेयर हो गई है, वेयर माय रीजनिंग और माय cognitive faculty has become impaired. In such cases, then it is called legal insanity. What is unsoundness of mind? It's a beautiful term to denote only legal insanity. So only legal insanity would be covered by this section. ये जो मैं बात कर रहा हूं, लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी, सो मेडिकल इंसैनिटी के अंदर इंसैनिटी है बट इमोशनलिज्म से रिलेटेड है, और वो उसके अंदर रीजनिंग मेरी वैसी की वैसी है। और जैसे मैंने बोला, बच्चे का पता चला, औरत भाग गई, या जैसे लड़ रहे थे तो पुलिस आ गई तो ठीक ठाक हो गए, ये सब इसका मतलब है इन मेडिकल इंसैनिटी माय रीजनिंग इज इंटैक्ट, हेंस it does not fall under unsoundness of mind. ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी वर्सेस मेडिकल इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बस 7 marks question. I would just like to quote legal insanity. Please write quickly. I'll be giving you some judgments. Legal insanity means a disorder of the mind which impairs the reasoning capacity of a man, his cognitive faculty, to such an extent to render him incapable of understanding the nature
and consequences of his actions. So legal insanity means a disorder of the mind which impairs the reasoning capacity of a man, his cognitive faculty, to such an extent to render him incapable of understanding the nature and consequences of his actions. Sunil Sandeep versus State of Karnataka. Sunil Sandeep versus State of Karnataka. 1993 Karnataka High Court. It is not every type of insanity which is recognized medically. It is not every type of insanity which is recognized medically that is given protection under this section. Like to go to the Supreme Court now. Surendra Mishra versus State of Jharkhand. 2011 Supreme Court. There is a difference between legal insanity and medical insanity. It is legal insanity which forms a basis of unsoundness of mind. The question which came up again in many Supreme Court judgments, what is unsoundness of mind? जैसे कि मैंने बोला, ये questions मेंस का है. Please be very careful. What is unsoundness of mind? Now, let's write down the relevant cases. Gajraj Singh versus State of Rajasthan. Gajraj Singh, G-U-J-R-A-J, Gajraj Singh versus State of Rajasthan, 2007 Supreme Court. I would like to quote the entire para. It is such a beautiful para. We must know it completely. Let's see. Please write down, क्योंकि अगर ये unsoundness of mind पे आ गया तो यही para आपको लिख देना है. The standard to be applied is whether according to the ordinary standard adopted by reasonable men, the act was right or wrong. There is no definition of unsoundness of mind in IPC. The courts have, however, mainly treated this expression as equivalent to insanity. But the term insanity itself has no precise definition. It is a term used to describe varying degrees of mental disorder. So every person who is mentally distressed is not ipso facto exempted from criminal responsibility. A distinction is to be made between legal insanity and medical insanity. A court is concerned with legal insanity and not medical insanity. Same view was held by the Honorable Supreme Court. Hari Singh Gond, G-O-N-D, Gond versus State of Madhya Pradesh, 2009 Supreme Court. So one thing which we have seen in various High Court judgments as well as the Honorable Supreme Court judgments,
It is not all kinds of insanity which come within the purview of Section 84. It is only the legal insanity which can be taken as unsoundness of mind. Medical insanity or any such insanity which does not impair the reasoning faculty of a man is outside the purview of Section 84. Now, the question arises, what is the test of insanity? What is the test of insanity? See, the important question arises, how do we detect insanity? How do we find that a person is insane? What is the demarcating line between sanity and insanity? बड़ा मुश्किल काम है ये पता लगाना कि पागल है कि नहीं. हमें कई बार लगता है ये आदमी पागल है. हम सब में कुछ ना कुछ तो पागलपन के स्ट्रीक्स होते ही हैं क्योंकि इमोशनलिज्म होता है. That is why, the test of insanity was a very difficult test to analyze. बहुत सारे टेस्ट इन्होंने बनाए. अगर हम पुरानी बुक्स देखें, मैंने पढ़ी हैं, I was trying to figure out what were the best tests of insanity. बहुत सारे टेस्ट रखे थे. राजा क्या करता था, एक आदमी को पागल हाथी या कोई भी वाइल्ड बीस्ट है उसके आगे खड़ा कर देता था. अगर वो नहीं उसको देख के भाग रहा तो पागल है. ये टेस्ट रहा है बहुत सारे जगह. काउंटिंग 20 पेंस टेस्ट था. चलो गिन के दिखाओ 20 सिक्के, 1, 5, 20, इस तरह पागलपन. तो बहुत सारे टेस्ट थे. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दोस. बहुत सारे वाहियात से टेस्ट थे, पर और कोई तरीका नहीं था. फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया. इसको हम मैगनॉक्टन्स केस कहते हैं. मैं अभी लिखूंगा, डोंट वरी. समझ लो, ये इसके ऊपर मैगनॉक्टन्स रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं. सेम इसकी स्टोरी क्या है? द एक्यूज वाज अ पर्सन कॉल्ड डैनियल मैगनॉक्टन. मैगनॉक्टन, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं इसके, ये इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. वी हैव गॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑन दिस. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड कि डैनियल मैगनॉक्टन को एक फोबिया हो गया, एक डेल्यूजन हो गया कि सर रॉबर्ट पील जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, ये मामला है 1843 का, मैगनॉक्टन्स केस. इसमें डैनियल मैगनॉक्टन को लगा कि रॉबर्ट पील जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको कत्ल करना चाहता है, मारना चाहता है. तो उसने फिर अंडर दिस डेल्यूजन वो रॉबर्ट पील को मारने के लिए चल पड़ा. उसके ऑफिस तक पहुंच गया और उसका एक सेक्रेटरी था एडमंड ड्रमंड. वो सेम बिल्ट का था, सेम काठी का था. तो उसने ये सोचा कि रॉबर्ट पील है, बैक थी, उसने उसको गोली मार दी और वो बेचारा सेक्रेटरी एडमंड ड्रमंड मर गया. नाउ रॉबर्ट पील वाज अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर. तो बहुत पब्लिक में उत्तेजना फैल गई, फांसी दो, फांसी दो. Now this man pleaded that he was insane. So he pleaded the plea of insanity. कि जी मैं तो पागल हूं. Now the court agreed
that he was under a morbid delusion and gave him the benefit. जब उसको बेनिफिट दिया गया तो पूरी पब्लिक में रिवोल्ट हो गया, और उस रिवोल्ट को देखते हुए 15 जजेस का एक बेंच बनाया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में. तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 15 जजेस का एक बेंच बैठा, जिन्होंने ये 5 क्वेश्चन ऑन इंसैनिटी डिस्कस करने थे और डिटरमिन करने थे. 5 क्वेश्चंस थे जो इनको फेस कर रहे थे. उनमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर्स हैं वो मैगनॉक्टन्स रूल्स माने गए हैं इंसैनिटी पे. So these 15 House of Lords judges discussed 5 questions which were put to them, and the answers to question number 2 and 3 of the 5 questions came to be known as Magnocton's, this is spelling, Magnocton's rules. हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है मैगनॉक्टन रूल्स क्योंकि मैगनॉक्टन रूल्स के ऊपर बना है सेक्शन 84. 84 has the base in मैगनॉक्टन्स रूल्स. सो वी मस्ट नो मैगनॉक्टन्स रूल्स. ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में और फिर आ सकता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है बिकॉज मैगनॉक्टन्स रूल्स became the basis of laws regarding insanity in criminal law all over the world. This became such a popular judgment कि immediately it was taken over and accepted by almost all countries. इसीलिए मैगनॉक्टन्स रूल्स हमारा 84 का भी बेसिस वही है. It is basically 84 is nothing but a reflection of मैगनॉक्टन्स रूल्स. What are these rules? पहले वो लिख लें. 3 बेसिक रूल्स दिए गए इन मैगनॉक्टन्स रूल्स. तो वो एक बार लिख लेते हैं. आई विल डिक्टेट दीज 3 रूल्स. क्विकली राइट देम प्लीज. तो पहला रूल, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन एंड पोजेसेस. सो प्लीज रिमेंबर सैनिटी का प्रिजम्पशन है. तो प्रिजम्पशन क्या है हर आदमी का? हर आदमी सेन है और इतनी उसमें सैनिटी है कि वो सही काम करे. सो फर्स्ट थिंग, every person is presumed to be sane and possesses sufficient degree of reason to be held responsible for his acts. So what is the presumption of law? As per first McNaughton rule, every person is presumed to be sane and he knows the consequences of the acts which he is doing. Second point, to establish the defense of insanity, it must be clearly proved. To establish the defense of insanity, it must be clearly proved that at the time of committing the offense, please underline this line, at the time of committing this offense, the person was so insane. At the time of committing the offense, the person was so insane as not to know the nature and consequences of his act. The person was so insane as not to know the nature and consequences of his act. Point number 3, rule number 3. The test of wrongfulness of the act. The test of wrongfulness of the act is the power to distinguish between right and wrong. The test of the wrongfulness of the act is the power to distinguish between the right and the wrong, not generally speaking, but in context of the particular act committed. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड वापस लिख लीजिए. द थर्ड पॉइंट इज द टेस्ट ऑफ wrongfulness of the act is the power to distinguish
between the right and the wrong, not generally speaking, but in context of the particular act committed. ये तीसरे पॉइंट का क्या नंबर क्या मतलब है? हमें उसका पागलपन जनरली स्पीकिंग नहीं देखना है. While doing that particular act, क्या वो पागल था? ये अब बैकग्राउंड को लेते हुए we now go through section 84. ये इन तीनों रूल्स को दिमाग में रखते हुए now let's read section 84. Act of a person of unsound mind. No insanity word is used. No idiocy word is used. No lunacy word is used. Unsoundness of mind. Nothing is an offense. It gives you complete immunity. Right from the ancient times, there is complete, absolute immunity. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, ये सबसे important phrase है, at the time of doing it. That means उस वक्त क्या मैं पागल था? यही सबसे important phrase है. At the time of doing it. I was insane in the morning. But when I committed the act, I was absolutely sane. I am liable. हो सकता है एक्ट के बाद में वापस पागल हो गया. Doesn't matter. It may be relevant as conduct under the Evidence Act. And also my prior and post conduct. It may be relevant. But as far as liability is concerned, it is your madness, unsoundness of mind at the time of committing the offense which is the most important thing to fix up your liability. So जहां एक आदमी ऑफिस गया, ठीक ठाक गया, चाहे उसको दौरे पड़ते थे पागलपन के, he went to his office, he went driving perfectly fine, he sat in his office, he was joking around with his friends. At 12 o'clock, they had tea, they were all fine. At 1 o'clock, while having lunch, suddenly he had a bout of insanity. And in that fit of insanity, he murdered somebody. Now the fact कि वो सुबह से ठीक था या कल से या 3 महीने से ठीक था, it is not enough to fix or not fix liability. For the purpose of fixing liability, it is basically the time, at the time when the offense was committed. That is the most relevant part. So, coming back to our topic, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, because of unsoundness of mind, is incapable. Here, by word incapable itself has a deep meaning. Not at all capable. The dictionary meaning of incapable is the opposite of capable. So when I say incapable means completely incapable. Is incapable of knowing the nature of the act. I do not know what I do. It is an excusable general exception. I know not what I do. Is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. और जो वो कर रहा है वो गलत है, wrong. See, when I say wrong here has many connotations. It may be
a wrong which we take in civil wrongs. It may be wrong in the generic sense because the next word is contrary to law. So wrong here means something wrong which is against the established norms. So that is why we have to take the word wrong in a much larger way. So section 84 very clearly also now reflects what we read in Magnocton's rules. Exactly वही है. अब एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई, इससे एट द टाइम ऑफ डूइंग इट से एक चीज और निकलती है. वो चीज क्या निकलती है कि एक आदमी जो इडियट नहीं है, इडियट तो पैदाइशी पागल है, तो वो थ्रू आउट पागल होता है. तो जो आदमी थ्रू आउट पागल नहीं है उसमें नेचुरली कुछ टाइम्स ऐसे हैं जहां वो ठीक है. जब वो ठीक है उस इंटरवल को हम एक वर्ड यूज करते हैं लॉ में. वी कॉल देम लूसिड इंटरवल्स. लूसिड शांत इंटरवल. लूसिड का मतलब होता है शांत. सो lucid interval. That means a person जो नॉर्मली पागल रहता है, अगर वो कोई lucid interval में एक्ट कर रहा है, then he will be liable squarely. He will not get the benefit of section 84. So whenever an offense is done under a lucid interval, then at the time of committing the offense, if he is in a lucid interval, he knows what he is doing. He cannot claim the benefit of section 84. On lucid interval, I have certain judgments. State of Orissa versus Bagh Shama. State of Orissa versus Bagh, B-A-G-H, Shama, S-Y-A-M-A, 1977, Orissa. Ramachandran versus State of Kerala. Ramachandran versus State of Kerala, 1986, Kerala High Court. S.K. Nair versus State of Punjab, 1997, Supreme Court. What was held in all these judgments? Some lunatics have fits of insanity and subsequent lucid intervals. It must be proved that at the time of commission of offense, the accused was suffering from a fit of insanity and the offense was not done during the lucid interval period. In other words, if at the time of committing the offense, the accused knew the nature of his act, he is punishable under section 84, even though he may have recurrent attacks of insanity. Now, when we were reading the word incapable, on incapable, I have a judgment. Dayabai Thakkar versus State of Gujarat, 1964, Supreme Court. Also, I have Amrit Bhushan Gupta versus Union of India, 1977, Supreme Court. It was held
the insanity for the purpose of section 84 should be of such a nature that it completely impairs, please underline the word completely, that it completely impairs the cognitive faculty of the mind. The cognitive faculty of the mind to such an extent that he is incapable of knowing the nature of his act and the consequences which will follow. Now, as we all know, we have read Evidence Act. Section 105 says that if any person wants to take the benefit of any of the general exceptions, the circumstances, then the burden of proving is upon him. So this section and all these sections of general exceptions must be read with section 105 Indian Evidence Act, which says if any accused wants to take the benefit of the circumstances which fall under general exceptions, then the burden of proving is upon him. However, the burden of proving is not beyond reasonable doubt. The burden of proving on the accused is always preponderance of probability because he already has a presumption of innocence attached with him. Now we take up some more aspects of this section. Is automatism unsoundness of mind? Would it be covered by section 84? Automatism. Automatism. Automatism basically means any reaction that occurs automatically without any conscious thought. जहां पे दिमाग सोचता नहीं है, कॉन्शियस नहीं होता, पर वो कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, सोमनैम्बुलिज्म, नींद में चलना, नींद में कोई एक्ट करना. इट्स कॉल्ड सोमनैम्बुलिज्म. आई विल राइट इट. Somnambulism. In somnambulism, it is an unconscious state. तो जब आदमी कुछ नींद में करता है, नींद में चलता है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है. अब अगर वो नींद के अंदर सोमनैम्बुलिज्म के अंदर कोई ऑफेंस कर देता है, he will get the benefit of 84. तो ऑटोमेटिज्म, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास सोमनैम्बुलिज्म, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर 84 का बेनिफिट अवेलेबल है. इसके ऊपर हमारे पास एक मद्रास हाईकोर्ट का भी जजमेंट है ऑन सोमनैम्बुलिज्म. रेफरेंस पापाथी अमल. इट्स अ रेफरेंस केस. रेफरेंस केस को कैसे लिखते हैं? RE कॉमा और आगे नाम. रेफरेंस केस क्या होता है? References we have in procedural laws, in the constitution. जहां हम बड़े कोर्ट को भेजते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, हम अपने और उसकी राय के लिए भेजते हैं, मार्गदर्शन के लिए भेजते हैं, उसको हम रेफरेंस केसेस कहते हैं. RE, they are shown as RE. तो रेफरेंस, in this reference case, this is Papathi, PAPPATHI, PAPPATHI, Amal, AMMAL. In this case, it was held that somnambulism is an unconscious act. The cognitive faculty is not intact. Hence, any offense done in somnambulism or in automatism would get the benefit of section 84.
The next aspect is a very important aspect from our examination point of view. What about hallucinations or delusions? इसके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं. You know, what is the state of hallucination? Delusion. Delusion is a state of mind जहां पे हमारी कॉग्निटिव फैकल्टी इंटैक्ट भी हो सकती है. इसका एक सबसे पहला एग्जांपल आया हमारे पास अशीर उद्दीन वर्सेस किंग एम्परर. ये पहला केस है. अशीर उद्दीन ASHIRUDDIN अशीर उद्दीन वर्सेस किंग एम्परर 1949 कैलकाटा का केस है ये. इसमें क्या हुआ? the accused had a dream. अगले दिन there was ईद उल जुहा को हम बकरीद भी कहते हैं. दो टाइप की ईद होती हैं. एक तो मीठी ईद होती है जिसमें हम सेमियां खाते हैं, दैट इज ईद उल फितर, जो रमजान के बाद आती है. और एक होती है ईद उल जुहा जो बेसिकली सैक्रिफाइस के लिए होती है. नाउ in this Eid ul-Zuha se ek raat pehle this accused had a dream in which the God himself came in his dream and told him कि कल सुबह अपने बेटे की बलि देनी है तुमने. तो बच्चा उसका 5 साल का लड़का था. तो उसको वो जब गया उसने अपनी नमाज अदा की. नमाज अदा करने के बाद अपने भाई को भी बोला कि मुझे ऐसे गॉड का फरमान आया है. और उसके बाद उसने after the prayers were said, he slit the throat of his 5-year-old son. Calcutta High Court gave him the benefit of this delusion, that he was acting under delusion. एक और इसके बाद केस आता है. वो आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में. लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 1953 इलाहाबाद. इस केस में एक भाई ने अपने स्टेप ब्रदर का मर्डर कर दिया. वो सुबह जाते हैं खेतों में, पहाड़ी पे जाते हैं, वहां जाके वो मर्डर कर देता है. और अब वो भी ये प्ली लेता है कि रात को मेरे फादर मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने कहा मेरी जो है आत्मा बड़ी भटक रही है, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, इसको मर्डर कर दे. तो मैं अपने फादर की आत्मा की शांति के लिए इसका मर्डर कर रहा हूं. Now, the Calcutta High Court judgment was quoted in Allahabad. Allahabad High Court rejected the Calcutta High Court judgment. They said, ये तो कोई भी plea ले लेगा. This is utter nonsense. हम इसको plea नहीं मानते. Then same view of Allahabad was taken by the Madras High Court. एक reference का वो भी reference case है Manickam. Reference case Manickam, MANICKAM Manickam. So Madras High Court also took the same view that an accused cannot take refuge under delusions under section 84. Same view was held also by the Bombay High Court in 1963. In other words, it is settled law now that a delusion where your reasoning or cognitive faculty is intact, of course. But if suppose there is a hallucination, the hallucination is continuing in the sense that he has now undergone there was a case where he genuinely believed that there are ghosts and he was jumping out of the window. He was about to jump when he saw some movement. He thought there is a ghost. He killed the person. Now this case would be taken separately. So अगर हम अशीरुद्दीन के केस को लें और इस केस को लें, जमीन आसमान का फर्क है. सो बेसिकली we can't have a blanket law on this. Each case will differ from case to case. It is a question of fact. But then delusion per se, delusions which are like what we have seen here, would not get the benefit of 84. I hope I'm clear on this case. Now, what about certain matters? Let's see. Suppose there is an offense committed in extreme anger,
fury, annoyance, mental agitation और irresistible impulse, नहीं रुक पाया एकदम. These are merely loss of controls and do not come under unsoundness of mind. We have, for example, uncommon ferocity. एक उसने इतनी बुरी तरह से मर्डर किया, 150 बार चाकू मारा, उसके पीस पीस काट के रख दिए. सर ये तो पागल है. He was held to be not पागल. So जहां ferocious crime है, mere ferocity of crime cannot be taken as unsoundness of mind. So brutal way of now this is what I've just quoted is Orissa High Court. A brutal way of committing an offense is not insanity, Kerala High Court. Similarly, an oversensitive mind बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, गुस्से में बहुत रिएक्ट करता है. An oversensitive mind is again not unsoundness of mind. Strange phenomenon, strange behavior exhibited after the offense. In this case, what happened? He committed murder. This man committed murder of his wife and children. और फिर एक तरफ लाशों के बीच में आराम से बैठ के खाना खा रहा था. लोगों ने दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो आराम से खाना खा रहा था लाशों के बीच में बैठ के. Now ये केस भी केरला हाई कोर्ट का. In that case they said mere strange behavior cannot be exalted to the level of unsoundness of mind. और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, but merely क्योंकि बाद में मैं ऐसे खाना खा रहा था, not enough. तो देर आर वेरी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स ऑफ अनसाउंडनेस. क्योंकि अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो तो बिल्कुल बच जाएगा वो. He gets no punishment. That is why it has to be taken with great care and caution. Similarly, an offense committed under extreme anger does not bring the accused under the ambit of section 84 IPC. बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको, उसने मर्डर कर दिया. No benefit. श्रीकांत भोंसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. श्रीकांत भोंसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 सुप्रीम कोर्ट. Crime committed for a very small reason is no unsoundness. कोई छोटा सा रीजन था, मर्डर कर दिया जी. Now this is no reason for unsoundness, because very serious offenses are committed for almost very minor motives. So this cannot be taken as one of the parameters. Now what about insanity caused by heavy intoxication or insanity caused by smoking incessant ganja? जहां पे incessant लगातार गांजा पीता था वो, या इंटॉक्सिकेशन करता था, इतना ज्यादा करता था कि उसके ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए. नाउ वेयर द ब्रेन सेल्स हैव बीन डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, he will get the benefit of section 84. So please remember, where the insanity caused by excessive drinking or heavy intoxication or smoking ganja leads to denigration of the brain cells, and he is unable to understand the nature and consequences of his act, he will get the benefit of section 84. On this we have a landmark case, Basdev, BASDEV, Basdev versus State of Pepsu, 1956, Supreme Court. See, the main point is unsoundness at the time of the offense. The existence of unsoundness of mind prior to the commission of the offense or after the commission of the offense is not the question to be determined by IPC.
It may be relevant in the Evidence Act, but it has no relevance in determining criminal liability. This matter came up again before Supreme Court. Ratan Lal versus State of Madhya Pradesh, 1971, Supreme Court. Now, as we said, we have to read it with Section 105 Indian Evidence Act. Also, when we relate it with CRPC, there is a complete chapter, separate chapter for trial of persons of unsound mind. Chapter 25 of CRPC prescribes an elaborate procedure for the trial of unsound mind people. Sections 328 to 339, they deal with the entire law. Chapter 25 deals with trial of unsound people. Now, before I end up this trial, there is a new concept which has come up in the world, though it has not been taken up in the Indian law till now. This is called the concept of diminished responsibility. What is the concept of diminished responsibility? हमने अभी पढ़ा मेडिकल इंसैनिटी. मेडिकल इंसैनिटी भी इंसैनिटी तो है, आदमी नॉर्मल नहीं होता है. तो जो आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो काम नहीं करेगा, वो मैं अपने इमोशनलिज्म में कर जाऊंगा. तो कायदे से देखा जाए तो इवन जो मेडिकल इंसैनिटी में जो हम ऑफेंसेस कर जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस आर कमिटेड इन मेडिकल इंसैनिटी, गुस्से में, एक्सट्रीम एंगर, तो कायदे से वो ऑर्डिनरी आदमी जो बिल्कुल भला चंगा है, उससे तो फर्क है. तो हम 3 लेवल्स में ला सकते हैं. एक तो हो गया जहां मेरी रीजनिंग फैकल्टी बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है, जो मेरी लीगल इंसैनिटी है, वो तो चलो 84 में आ गई. बट जहां मेरी मेडिकल इंसैनिटी है, वहां पे भी मैं ऑर्डिनरी आदमी से तो अलग ही हूं, मैं नॉर्मल नहीं हूं. तो इसीलिए चलो मुझे माफ नहीं करोगे पूरा, पर मेरी सजा तो कम कर सकते हो. इसीलिए एक कंसेप्ट बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे सिंगापुर ने, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वेस्ट की कुछ कंट्रीज हैं, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, क्रिमिनल लायबिलिटी है, बट उस हद तक नहीं है जो एक ऑर्डिनरी सेन आदमी करता है, उससे थोड़ी कम मेरे को सजा मिलनी चाहिए. ये एक नया कंसेप्ट है डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का. हाउएवर, ये लॉ कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था. द लॉ कमीशन इन इट्स 42nd रिपोर्ट, दे सेड इंडिया अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, तो वी डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस कंसेप्ट ऑफ डिमिनिश्ड responsibility. So I hope now everybody is clear about all the aspects of Section 84 IPC, the entire chapter of unsoundness of mind. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.